thought of making students from smaller towns and smaller villages of India successful. That's my mission. Who told us that a degree should be 4 years or 3 years? It was not God for sure. By the time students come to us, they've gone through 15 years of educational abuse. बहुत challenges हुए सिमर, I can't explain. बीच में तो लगा कि सब कुछ बंद हो जाएगा. I worked with people like Ratan Tata. Imagine a young 23-year-old shaking hands and talking to Ratan Tata and calling him Ratan, not just Mr. Tata. I can see that energy, I can see the vibe, कि छोटे शहर का लड़का बोल रहा है. यार आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं. मैं स्पेशल इसलिए बोलता हूँ बिकॉज एक तो मैं पर्सनली I've had the opportunity to know the guest very well in the recent times, बट स्पेशल इसलिए भी है कि ये ना मतलब जब हम एक वाइस चांसलर या एजुकेशन सिस्टम की जब बात करते हैं तो आपके मन में आता है कि बहुत कोई फॉर्मल बंदा बैठा होगा, बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एटमोसफेयर होगा. एटलीस्ट मेरा जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये था. बट टुडे वी हैव अतुल खोसला. He's the founder and VC of Shoolini University, now India's #1 private university. Atul ji is ex McKinsey, IIT Kanpur, and जब हम बात करेंगे तो यूल रियलाइज दैट जो भी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ए चांसलर वाइस चांसलर है वो आज काफ़ी बीट होगा. बट मोर इम्पॉर्टेंटली ही इज़ अ वेरी इंट्यूटिव एंड अ वेरी डीप पर्सन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन. अतुल जी. So first of all, thank you, Simar. वैसे मैं विप लेके आया हूँ और मेरे पास एक वो केन भी रहता है पढ़ाई करने के लिए. I'm just joking, of course. But lovely to be here today. What a lovely day, but what a gracious occasion. आपने बुलाया, couldn't have said no, and very excited to do this गुफ्तगू. अतुल जी, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ. आपके ना लिंक्डइन पे लिखा हुआ है ऑन स्टेल्थ मोड. what kind of mode are you on? Stealth mode का क्या मतलब है? हमको थोड़े अपने व्यूअर्स को और डीपर बताओ. what kind of a mission are you on? At this moment, we're trying to build an online university. And the vision of this online university is something very different. I believe that education has to be inclusive. हर किसी को education मिलनी चाहिए. अगर आप existing online platforms देखेंगे तो 70,000, 80,000, 1.5 लाख की डिग्रीज हैं. हमारा पैशन बड़ा सिंपल है कि क्या हम 5,000 रुपये में, 8,000 रुपये में हर बच्चे को जो पढ़ना चाहे उसको हम एक हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी डिग्री दे सकें. जो रिकग्नाइज इंडिया में भी हो और दुनिया में भी हो. और एम्प्लॉयबल भी हो बच्चा, स्किल्स भी आए. और अगर हार्टेक में उसको जॉब मिल जाए तो और भी बढ़िया है. Absolutely. And that's the reason why we say I wrote stealth mode, because it's something which we're working on. It's still under wraps. And you're very passionate, right? मैं जब भी आपको मिला हूँ, जब भी आपके यूनिवर्सिटी में आया, you talk about these numbers, right? And पहले तो मुझे ये बात बताओ जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बात की, that नॉर्मली एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, कोई चांसलर को, वाइस चांसलर को मिल रहे एकदम फॉर्मल्स में. मैं आपको जब भी देखता हूँ यू आर बाहर आप बैठते हो टीम के साथ, यूर इन अ जीन और अ टी शर्ट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस? ये क्या सोच है आपकी इसके पीछे? और व्हाट इज इट योर कॉर्पोरेट कल्चर दैट यू ब्रिंगिंग हियर? और तो सबसे पहले तो सिमर, कॉर्पोरेट कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो था वो McKinsey से था. आई स्टार्टेड विद अ फर्म कॉल्ड McKinsey Company, which is a very stiff consulting firm. वहाँ पे तो हर कोई टाई, सूट और सॉक्स का साइज भी बताते थे कि इतना सॉक्स पहनना चाहिए. ऑफ कोर्स पॉलिश शूज. सो डेफिनेटली नॉट फ्रॉम द कॉर्पोरेट. बट लेट मी गिव यू 3 थिंग्स व्हाई आई बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो इन माय ओपिनियन वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ लर्निंग और नॉट इन द प्रोफेशन ऑफ लर्निंग. आई थिंक इन हायर एड वी आर इन द प्रोफेशन ऑफ इंस्पिरेशन. अगर हमने बच्चों को इंस्पायर कर दिया तो वो मैजिक कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं सिमर. तो इंस्पिरेशन जो है वो स्टिफ चीज़ों से नहीं आती. इंस्पिरेशन खुलेपन से आती है. तो आपने इंडियन आइडल देखा होगा, उसमें जब बच्चे गाते हैं तो जजेस होते हैं, बोलते हैं खुल के गाओ. उसी तरीके से हमने बच्चों को खुल के जीना सिखाना है. वी हैव टू मेक देम अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, बी रिस्पॉन्सिबल, but still be comfortable with what they wear. So I think that's the first thing. I think the second thing, which I think is also very important, is inclusiveness. So I think as Vice-Chancellor, I have to dress like my student. अगर उनको लगेगा अरे यार तो बहुत पर्दे हैं सामने, बहुत
वुडन रूम्स हैं और वुड पैनल रूम्स हैं, Hmm. you can't enter the room, Right. then you're preventing the student to reach out to you. And our वो role is वॉल to, बन जाती है आगे, बिल्कुल वॉल करेक्ट। बन हाँ। जाती है, और हमारा रोल है उस वॉल को तोड़ना। करेक्ट तो करेक्ट। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसे में कपड़े पहनता हूँ, बट I think it's good. It's Yeah. good for the students. They feel that they're talking to a friend. Right. और तीसरा जो सबसे important reason है, बड़ा comfortable है सिमर Comfortable, जी। correct, So comfort is above anything else. So that's why I wear such Absolutely. clothes. But I think it's less about the clothes which I wear. I think it's more about the thought. Like I spoke about inspiration. Extremely important. The second thing I want to talk about is inclusiveness. How do we ensure that जो बच्चा हमारा छोटे शहरों में पढ़ा है, हिमाचल का बच्चा जो छोटी जगह में बैठा है, अर्की में जैसे बैठा है, उसको मौका नहीं मिलता है। उसको मौका क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ स्टीरियोटाइप्स। हर कोई सोचता है कि ऐसा होना चाहिए एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल, वो इंग्लिश बोलेगा चटर चटर, वो जीन्स पहनता है या नाइकी पहनता है, there's a particular image in a mind. एंड ये जो बच्चा है जो गांव का है, हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट है, हो सकता है उनसे बहुत आगे है, बट कंपनीज उनको मौका नहीं देती। सो हमने ये बैरियर तोड़ने हैं सिमर, और अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा? और हम नहीं तोड़ पाएंगे तो इंडिया तरक्की नहीं कर पाएगा। बिकॉज प्लीज रिमेंबर 80 to 90% of our students come from such lesser privileged backgrounds, and these are going to be the future winners of the country. And the role of every higher educational institution, I believe, is to make winners out of these 80-90% students. आपने इंडिया की बात की, तो कहाँ पले बढ़े आप सर? क्या आपकी मतलब हाउ वाज योर चाइल्डहुड, वेयर डिड यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम, हाउ वाज आईआईटी कानपुर? थोड़ा जस्ट वो बताओ कि कहाँ पे आप पले बढ़े एंड हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग? तो आप विश्वास नहीं करेंगे मगर मैं चंडीगढ़ में पैदा हुआ। अच्छा। सो माय फादर वाज वर्किंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी। जी। उसके बाद पापा गॉट अ कॉमनवेल्थ फेलोशिप, ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड. So I very proudly say that my primary education started at Oxford. उसके बाद हम सोलन आ गए. पापा got a job in Solan. So I grew up in a small town. सोलन में एक छोटा सा स्कूल था सेंट ल्यूक्स, वहाँ पे हम पढ़े. और एक छोटी सी जगह थी सोलन कि हम सोलन में छुपन छिपाई खेलते थे, हाइड एंड सीक, पूरा सोलन, पूरा दिन. And that's the type of environment I grew up. I did my 11th and 12th from Government College Solan. Of course, in those days, no one from Solan was going to IIT. But my elder brother Ashish, वो PC में पढ़ा, तो उसने कहीं पे कुछ कीड़ा डाल दिया. He said, अतुल IIT जाना है. So बस कहीं पे वो कीड़ा चला गया, सिमर पढ़ाई करी और IIT में हो गए. So I'm very proud to say that thanks to my teachers, thanks to Ashish and others, I was the first student ever to clear JEE from Himachal. रियली? बड़ा मुश्किल था, हर कोई हंसता था कि नहीं कर पाएंगे, बट अभी भी मुझे याद है कुछ अग्रवाल क्लासेस होते थे, वो पढ़े हम, कुछ बस हो गए समझ बट लो. सर कैसे, मतलब बिफोर वी कम टू योर आईआईटी जर्नी, मतलब आपने बोला कि फर्स्ट पर्सन टू क्रैक आईआईटी फ्रॉम हिमाचल, हाउ इज द एस्पायरेशन दैट टाइम ऑफ पीपल ऑफ हिमाचल, पीपल ऑफ सोलन? आपके आसपास कैसे लोग थे? So, उस वक्त तो हिमाचल में था कि चलो यार इंजीनियरिंग कॉलेज ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है. सो द एस्पिरेशन वाज ईदर मेडिकल और इंजीनियरिंग, एंड पीसी वाज लाइक द नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज. बट आम तौर पे लोग आरईसी जाते थे. आरईसी कुरुक्षेत्र में बहुत बच्चे गए, क्योंकि आम तौर पे हिमाचल के बच्चे को कंपेटिटिव एग्जाम क्रैक करना नहीं आता था. तो आईआईटी में कुछ बच्चे गए, बट वो बहुत पहले आईआईटी में मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन भी मिलती थी. सो कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड्स के बच्चे भी आईआईटी में पढ़े, ऐसी बात नहीं है, बट वो थ्रू मार्क्स के बेसिस पे गए. सो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का कोई प्रेशर नहीं था. या बच्चे चंडीगढ़ आते थे पढ़ने के लिए, डीएवी में आते थे, या दिल्ली भी गए कुछ बच्चे डीपीएस में पढ़ने. तो आपने तैयारी सोलन में की? सो हमने तो 100% सोलन में करी सर. अच्छा. सोलन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हाँ. और वहीं से निकले, और आई एम स्टिल वेरी तो प्राउड ऑफ कैसे? इट. हाँ. और वही इथॉस मैं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू आईआईटी कानपुर, when I went to IIT K, while I did go to a convent school, I couldn't really speak a word of English. टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था. तो किस्मत अच्छी ऐसी रही कि मेरा रूममेट जो था वो चेन्नई का था, मद्रास का था, मद्रासी ब्राह्मण था. तो उसको हिंदी नहीं आती थी, मुझे तमिल नहीं आती थी, तो थोड़ा इंग्लिश भी सीख गए सर, English was थोड़ा बोलने में. हाँ. और मेरे जो विंगमेट्स थे वो कैलकाटा के थे. तो कैलकाटा में there's a school called आम आठनीय,
and we used to call them Boston Brahmins. So थोड़ा sophistication भी आ गई उनके साथ. So anyway, IIT was a great time. I learned how to fly planes. पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करी. I was a true 6.2. So आपने 5.0 वो बुक पढ़ी होगी चेतन भगत की 3 Idiot, तो मैं पूरा 3rd Idiot ही था. 4th year तक कुछ हवा नहीं थी. हवा इज़ अ वेरी आईडी वर्ड कि ज़िंदगी में क्या करेंगे, बस चल रही थी ज़िंदगी, बड़ी मुश्किल से पास होते थे. तो अरुण शौरी जी आए और अरुण शौरी ने एक लेक्चर दिया एंड ही स्पोक अबाउट क्वालिटी. और ऑनेस्टली मैं और संतोष मिश्रा जो मेरे बड़े प्रिय दोस्त हैं, समोसा और चाय के लिए गए थे अरुण शौरी को मिलने. बस अरुण शौरी ने क्या जादू डाल दिया. क्या बोले, ही स्पोक अबाउट 6 Sigma. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट why perfection is important and why India should move towards deep perfection. 6 Sigma. कहीं से बस आग लग गई. And that changed my life. That changed Santosh's life. Santosh IAS officer बने. तमिलनाडु काडर में थे. अब उन्होंने he's resigned from or retired from the services. He's a partner with PwC. और मैंने थोड़ा सा डिफरेंट जर्नी किया. मैं वहाँ से MBA किया and then I started my professional journey with McKinsey. But the thought of making students from smaller towns and smaller villages of India successful, that's my mission. बहुत सारे लोग बोलते हैं IIT में भी तो छोटे शहरों के बच्चे पढ़ते हैं. आपने भी तो कुछ किया अतुल. और मेरा थॉट ये है कि सिमर आउटलायर्स हर जगह पे हैं. तो 10-15% बच्चा तो अच्छा करेगा ही करेगा. क्वेश्चन ये है कि जो 70% वैली ऑफ इंडिया है, क्या उसको हम मूव कर सकते हैं कि नहीं. और वो मूव करना है क्योंकि इंडिया का फ्यूचर इसी 70% वैली ऑफ इंडिया में है. बट उस टाइम पे आप कभी सोचते थे कि एक यूनिवर्सिटी बनाओगे? कभी दिमाग में आता था कि उस टाइम के जो एजुकेशन सिस्टम था, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, बहुत अंतर है. तो बट आई वांट टू रियली इफ यू गो बैक टू द सेम. अब मैं ना सीरियसली बात भी करूंगा बट थोड़ा जोक भी हमारी फैमिली में. तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो माय फादर इज अ साइंटिस्ट. सो उन्होंने, ही इज़ अ ग्रेट टीचर आल्सो. सो बहुत सारी बुक्स लाते थे, बहुत सारी बुक्स पढ़ी आइंस्टाइन के बारे में, न्यूटन, यू नेम द साइंटिस्ट, मेंडल, हरगोबिंद खुराना, यू नेम इट. सो आई थॉट दैट नोबेल प्राइज तो जीतना ही है. So if you had asked me in standard 8, I would have said, I'll win the Nobel Prize. फिर ना 11th 12th ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होता है हर बच्चे के करियर में इंडिया में. सो जो हवा होती है वो 11th 12th में निकाल दी जाती है हिंदुस्तान में. तो जितना आप में इनोवेशन होता है, आप में एनर्जी होती है, you're just put on to the same track. किसी तरीके से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए. तो मेरे साथ भी यही हुआ. सो हमने अग्रवाल क्लासेस पढ़ ली, थोड़ा रट्टा वट्टा भी मारा होगा, जो भी किया, IIT में चले गए. सो वेरी सून आई रियलाइज दैट मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाज नॉट मी. सो पहला फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ सिमर, तो आई गॉट 0 out of 10. सो मैंने सोचा चलो ये पहली बारी तो कोई बात नहीं. सेकंड 0 out of 10. आई सेड अभी भी चांस होगा. थर्ड भी 0 out of 10 आया मेरा क्विज में. तो आई सेड इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर मी, मेरे बस की बात नहीं है. तो फिर मैंने सोचा यार इकोनॉमिक्स की जाए. सो मेरा सेकंड ड्रीम था दैट आई विल विन अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. So in fact, when I was interviewing for McKinsey, they asked me, what's your long-term goal? So I always wanted to go to University of Chicago, and do a PhD in economics and hopefully win the Nobel Prize. अब वो भी नहीं किया. अब मैं जो करता हूँ तो पीस का नोबेल प्राइज का तो अभी भी चांस है सिमर. So anyway, we were always educationists. My mother is an educationist. My father is an educationist. So wanting to be a professor and a teacher was always there. Deep inclination थी. और जब मौका मिला तो एक बारी भी hesitation नहीं हुई और came back to Solon to be part of the university. But IIT Kanpur खत्म हुआ and then you took a completely corporate journey, right? You started with McKinsey. कैसे, what was your journey look like? मतलब McKinsey, how was McKinsey? Were you campus placed from there or did you apply? What was your journey after IIT Kanpur? So मैं viewers को दो चीज़ें बताऊंगा. पहले तो we all believe that we plan our destiny or plan our careers, and I think that's so wrong. So just flow. बहते रहो, पानी की तरह. ambition के साथ बहो. Follow your heart, follow conviction, but work with passion and love.
and be very ambitious in your dreams. So I think I was always ambitious. I was not a great student, but I was always ambitious to believe that I can do something different. So I always wanted to go and study in the US and do my MBA there. And I took the GMAT. I didn't want to go to an IIM. हो सकता है because my elder brother went to IIM Calcutta. मुझे लगा कि उससे कुछ आगे निकलना है. या बड़े भाइयों को तुमको ऐसा भी लगता है कि मैं उससे थोड़ा आगे जाऊंगा. So I wanted to do my MBA from the US, possibly go to Harvard. So I took up a job in a company called COSIL, which was a tech company. Okay, this is just after IIT Just out of IIT. Okay. So मैं बॉम्बे पहुंच गया. Okay. अब मैं दादर स्टेशन पे उतरा बॉम्बे सेंट्रल में. इतने सारे लोग मैंने नहीं देखे सिमर. तो सबसे पहला तो ये हुआ ये क्या बॉम्बे ऐसा शहर भी होता है. But I failed in IT. मुझसे कोडिंग नहीं होती थी. So I still remember at Citibank, I was given a project on a platform called Kix, CICS, COBOL based था. मुझसे तो वो भी नहीं हुआ. तो 3 महीने तो मैंने कुछ फ्रॉड मारा, इधर उधर लाइब्रेरी में बैठ के कोशिश करी. फिर मेरे 92nd डे में माय बॉस कॉल्ड मी, सेड दिखाओ कि क्या बनाया है. तो मैंने तो कुछ बनाया नहीं था, मुझसे कोडिंग ही नहीं होती थी. सो आई डिसाइडेड दैट इफ द एल्स कैन नॉट बी माय लाइफ, and I decided to plan for an MBA. Luckily, the Jamnalal Bajaj exams were on, so I took the exams. I got selected. अगर वो मैं ना करता, फिर I wanted to be an IAS officer. So फिर मैंने civil services की तैयारी करनी थी. But anyway, वो हो गया. बजाज में And Bajaj was right up there. It was very difficult to get in Bajaj because बजाज में सिर्फ 60 सीट्स थी. Correct. जो लोगों को नहीं मालूम होगा. और आउटसाइड ऑफ बॉम्बे या महाराष्ट्र की सिर्फ 4 सीट्स और बहुत स्ट्रांग एलुमनाई बेस है उनका, मतलब जनरल. You had to be in the top 4 in the country. Correct. So बस वो लेट्स से किस्मत हो गई. मेरे अंकल हैं, उनका नाम राज खोसला है. नॉट द एक्टर और द डायरेक्टर राज खोसला, बट ही इज आल्सो वेरी कैरिज्मेटिक. तो उन्होंने बहुत पुश किया. उन्होंने बोला कि नहीं अतुल, तुमको करना है ये. एग्जाम के दिन में, बजाज के एग्जाम में दिन में मैं बहुत बीमार था. सो ही पुश्ड मी एंड आई टुक द एग्जाम. एंड आई थिंक बॉम्बे वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी फॉर 2 रीजंस. IIT में मैं बहुत नीचे था एकेडमिक्स में. आई टोल्ड यू आई ग्रेजुएटेड विद अ CGPA ऑफ 6.9. वो भी क्योंकि फाइनल सेमेस्टर में 9.8 आ गया. उससे पहले तो सर्वाइवल का इशू था सिमर. पर बॉम्बे में पहुंच के सडनली जब वो मैथ पढ़ाते थे तो बॉम्बे के बच्चे तो बेहोश हो जाते थे जब अल्फा बीटा थीटा देखते थे. नलायक IIT का बच्चा भी इतना तो जानता था. तो सडनली आई आउटशोन देम इन मैथमेटिक्स. Suddenly I also realized the social skills needed to succeed. मैं बोलने में बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा स्टैमर करता था. तो थोड़ा सा वो बॉम्बे का वो हो गया. रिसर्च का थोड़ा शौक था. तो एक मैंने IIT में रिसर्च पेपर लिखा था ऑन सैटेलाइट्स. सो मेरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है. सो आई समटाइम्स जोक आई एम अ फेल्ड रॉकेट साइंटिस्ट. सो मैंने कुछ सैटेलाइट्स पे रिसर्च पेपर लिखा था विच गॉट पब्लिश इन द वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस, वेरी प्रेस्टिजियस. फिर मैंने MBA में भी 2 रिसर्च पेपर लिखे. और फिर मैं थोड़ा बहुत I used to fly planes. So when I interviewed for McKinsey, they came to campus. I didn't realize that these are the things that they look for. So I had all the ticks in the box. I was from IIT. I was not a good student, but that's okay. I did something very different, which was flying planes. I had done a very interesting subject called aerospace engineering. And I had also done research papers. So I had all the ticks actually to make it to a great firm. And I was very lucky. I made it to McKinsey. And that changed my life. And McKinsey कब से कब था? This was which year we are talking about? I'm talking about 95. So 1995 is when I made it to McKinsey. Okay. It was a tough journey and I can speak about it now. And this is for my viewers. I was bad at speaking. My communication skills are not very good. So 3 months into McKinsey, the MD for India, Tino Puri, calls me and says, Atul, we have to let you go or you have to move to research. You do not have the style to succeed in consulting. Of course I didn't. छोटे शहर का बच्चा था. Fork, knife कुछ पकड़ना नहीं आता था. बोलना नहीं आता था सिमर. While McKinsey was stiff upper lip. McKinsey in those days was the Boston Brahmins of the consulting world. Anyway, थोड़ा courage था. बड़ी हिम्मत से I told Tino, I said, please give me a chance. And he had the graciousness to say, okay, I'll give it 2 years. But his parting thoughts were, Atul, I do not see you succeed in consulting for more than 2 years.
बस कुछ जुनून आ गया फिर सिमर. For the next 7 years, I would speak to a camera every day for the next 7 years. तो थोड़ा बोलना सीख गए. And I was successful in consulting. I was in McKinsey up to 2003. And then I continued in consulting till I joined Shoolini. So I had a good 20 plus years of successful consulting experience. My last job was I was on the board of a company called Oliver Wyman. I was the India CEO. Oliver Wyman is the third largest consulting firm in the world after McKinsey and BCG. So I not just succeeded in McKinsey, but also succeeded in consulting. And now Tino is a great friend and very proud of what I've done. मैकेंजी आप कितने साल थे 95 से? मैं 7.5-8 साल था. 7-8 साल के आसपास. Approximately. एंड उसके बाद फिर आपकी जर्नी मैकेंजी उसके के बाद बाद मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग थी. You went to US also, no? मतलब बीच में. Well, during McKinsey, I went to 6-7 different countries. I worked out of the United States in New York. I was in Brussels. I was in Germany, Switzerland for a short period of time, UK, Australia. So I did a bunch of work across the world. So very proudly, I say that I worked out of 7 different countries, 35 different cities. Great exposure, because that's the exposure you need to succeed. You know, how do you succeed in different cultures? So I got a job to be the India CEO for a company called Watson White. This is And 2004. I was 2002, 2003. Okay. I just my son was just born, and that's the time when you want to do something different. And who could say no to a Mercedes car and a flat in Laburnum, Gurgaon? It sounded very good. CEO tag. I was all of 31, 32. So I left McKinsey. I joined Watson White. But that was a great experience, because if I had not done Watson White, I don't think I would have survived in the other things which I did afterwards. So I co-founded a company called the Everest Group. A friend of mine, Peter Bender Samuel, I'd known him from the past, said, Atul, would you like to build India for me? So I built the India and the Asia practice for Everest Group. Today, Everest, anyone in the outsourcing industry would know, is the largest outsourcing advisory firm in the world. So 2-3 saal wo kiya. I then moved to Switzerland to set up a company called A-Connect. A-Connect was a quasi-consulting firm, went through a small liquidity event over there, and then came back to India in 2008 with Oliver Wyman. So 2008 से 2012 तक मैंने Oliver Wyman किया. I built the practice in India. Basically, I started it from scratch. और फिर Shoolini वहाँ से. Everybody just says that, you know, McKinsey has this great platform of, you know, they give you this great platform where you can just express yourself, grow, and जितने भी आप देखो, you know, top people इस time पे, they are somewhere related to McKinsey or something of that. ऐसा क्या है वो culture में? What is there that makes McKinsey, you know, one of the largest consulting firms in the world? I think it's not just consulting. I'll speak a little bit about McKinsey, and this might be true for other firms too. But I'm told that there are 130, 135 unicorns in India. हाँ जी. Out of the 135, I think 30 or 34 are founders who've had a McKinsey background. Yes. There's something special happening there. So what's happening? So सबसे पहले तो they hire the best. So imagine from IIT you go to an IIM. So there's also already a filtration that's happened. Uske baad, they'll pick up 10, 12, 15, right? But the culture of McKinsey is extremely, extremely quality conscious. There is no compromise. In terms of hiring? No, even the work. So the values of McKinsey are very simple, that we will deliver the best to our clients and we will hire and retain the best talent. 2 values हैं बस. So the culture जो है वो बड़ा teamwork driven culture hai. There is no compromise on quality. You have to be exceptional in your work. Every year, at least in my days, they would chop off the bottom 20%. So har saal 20% logon ko nikal diya jata tha. It was up and out. So you also become very competitive. You learn the skills. You're also meeting great people. For example, I worked with people like Ratan Tata, Mr. Oberoi of Oberoi Hotels. Directly working. Of course, as a young consultant, you're directly working with CEOs. And I think that's a phenomenal experience you're getting when you're working in a firm like McKinsey. Imagine a young 23-year-old shaking hands and talking to Ratan Tata and calling him Ratan, not just Mr. Tata, which I would have done. Or other CEOs that you would have seen. And I think that's the exposure that firms like McKinsey are able to give you.
Then I talked about quality, and I think professionalism. So your ability to deliver on time, of the right quality, no compromises. And the last thing, most important, is values. Values are very, very important, Simar. Honesty, integrity, and ability to make people happy. I think that's what makes organizations successful and exceptional. आप तो अ, बहुत हरमंदर साहब में बिलीव करते हैं, गुरुजी में बिलीव करते हैं, तो गुरु नानक का भी यही था, रिलीजन में भी यही है. Why do people come together and create magic through religion? Because you've got aligned values and honesty and integrity, along with hard work and passion to deliver for the underprivileged. आपके रिलीजन में है, हिंदुइज्म में भी है, हर रिलीजन में है. और जब ऑर्गेनाइजेशन में आप ये वैल्यूज लेके आएंगे तो मैजिक होगा. मैं अभी अभी आई एम स्टिल स्टक इन 2008 2010, मतलब अभी एक मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, एंड आपके कितने स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे आपकी यूनिवर्सिटी के ना, कि एक बंदा जो एक स्मॉल टाउन जिसको हम कह सकते हैं भी, एक सोलन का लड़का आईआईटी जाता है, फिर एमबीए करता है, फिर मैकेंजी जैसे कंसल्टिंग फर्म में पूरी दुनिया घूमता है, उसके बाद ऑल कंसल्टिंग कंपनीज में काम करता है. बट कहीं ना कहीं कहना है, इज़ इट फेयर टू से दैट कहीं ना कहीं आपके मन में जो स्मॉल टाउन बॉय था और जो इम्पैक्ट ड्रिवन की आप बात करते हो हर जगह में, वो था कि नहीं यार, वापस कहीं ना कहीं सोलन तो आना ही आना है? सोलन का प्री पार्टीशन नाम स्टेट ऑफ बघाट था. ओके. So, एक कहावत है, जिसने पानी पिया बघाट का, ना घर का ना घाट का. So anyway, jokes apart, I loved the mountains. I loved growing up in where I did, which is Solon. And that was one of the key reasons I moved to Switzerland. मैंने आपको स्विट्जरलैंड की बात करी. I spent a few years in Zurich. So पहाड़ों में तो आना ही था वापस. But 90% लोगों को मौका नहीं मिलता है. In fact, I would say 99% लोगों को मौका नहीं मिलता है अपने दिल के काम करने का. So I'm thankful to my father who started Shoolini. अगर शूलिनी ना होता तो बहुत मुश्किल था वापस आना, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिल गया. वो प्लेटफॉर्म तो पापा ने बनाया था. अगर वो प्लेटफॉर्म ना होता, खुद जाके सोलन जाके कुछ स्टार्ट करना, मुझे लगता है शायद पॉसिबल ना होता. तो कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब टेल मी समथिंग बिफोर, जब आपने ज्वाइन की, मतलब टेल अस समथिंग अबाउट दैट. काफ़ियों को नहीं पता होगा शूलिनी स्टार्ट कैसे हुई. हाउ डिड खोसला सर स्टार्ट दिस, एंड वो क्या इंस्पिरेशन था? वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं, बट एक स्टोरी तो यह है कि पापा ही वाज अ सीनियर एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. सो उन्होंने अपने सीएम से बात करी, उन्होंने थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन दे दिया, बोला डॉक्टर साहब आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं. उनको कुछ, कई बारी फुलिश होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सिमर. उनको पैसे वैसे के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने सोचा बना लेंगे यूनिवर्सिटी. तो ये 20 lakhs जो ग्रेचुटी और रिटायरमेंट में मिले थे. दिस इज व्हाट ईयर? 2000? This is 2004. 4. Okay. So he called me. I remember he must have called my brother also. Ashish was in Abu Dhabi then. So he said कि my nickname is Shishu at home. He said Shishu मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है. I said wow, बिल्कुल बनाइए. I asked him कितने पैसे हैं आपके पास. He said 20 लाख. I said आपका प्लान कितना है? He said 80 crores. Very proudly he said मैंने बोला पैसा कहाँ से आएगा? कहता है नहीं, बैंक से मिल जाता है. यार कंसल्टेंट हैट आपने डाल ली हमने. तो मैंने बोला चलो कर लो. फिर मैंने मम्मी को फोन किया. आई सेड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपकी कोई पैसे की जरूरत नहीं है, बट अपना घर का मकान गिरवी मत रखना, फिर मेरे पास मत आना कि सब कुछ बिक गया. बट एनीवे, दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योर्स आर. सो डैड इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. We were able to get some money in. We got partners in. I think he's got a phenomenal instinct about business. And that comes from probably because he grew up in Ludhiana. So my dada was in Ludhiana. So he grew up in the streets of Brahmpuri, which is the mecca of business of Ludhiana. Yeah. So I think वो business instinct था, entrepreneurial instinct था पापा का. And education background And था, education core background पे. था. And he's always been exceptional in his work. And so he got this in his mind. It got stuck. And then everyone came together to build it. एक तो नाम जो है शूलिनी, आप सबको नहीं मालूम होगा, बट ये सोलन की गॉडेस है शूलिनी माँ, उनके नाम पे है. इनकारनेशन ऑफ दुर्गा फ्रॉम शूल. सो दैट्स, और हम बिलीव करते हैं कि हमारे ऊपर शूलिनी माँ का वरदान है. पैसा भी आ गया थोड़ा सा बनाने के लिए, बैंक का लोन भी आ गया. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक इट वॉज पापाज एबिलिटी, इंक्लूसिवनेस आई स्पोक अबाउट, कि सबको साथ ले आए. तो
मी, आशीष, हमारे पार्टनर्स हैं विशाल, उसके पापा सतीश अंकल, all of us came together with a common mission. And the mission was very simple, to build a great university. बहुत challenges हुए इसमें, I can't explain, I won't go through that. बीच में तो लगा कि सब कुछ बंद हो जाएगा. But I think both my mom and dad had undiluted belief in Shoolini. I had undiluted belief. Everyone had undiluted belief कि हम कुछ बनाएंगे और बहुत बढ़िया बनाएंगे. So right at the start, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, 20 लाख रुपए थे, we put a statement of a vision where we said that we will be a top 200 global university by 2022. ये हमने 2006 में अपना विजन लिख दिया. बट अभी ये पार्ट हो गए थे शूलिनी, वर यू पार्ट ऑफ आई वॉज वो आपको मैं स्टोरी बता रहा था. 2008 में वापस इसलिए आया क्योंकि मुझे शूलिनी ज्वाइन करनी थी. ओके, तो 2010 में मैं मुझे आना वापस आना था, शूलिनी ज्वाइन करनी थी. तो आई केम विद ऑलिवर वाइमन. 2010 में मैं पार्ट टाइम आया, मैं 50-50 कर रहा था. 2012 से आई मूव फुल टाइम टू शूलिनी. सो बट आप सोचो 2006 में हम ड्रीम कर रहे हैं कि दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी बनेंगे. आईआईसी बैंगलोर और आईआईटीज उस जमाने में कोई 300-350 रैंक के थे, और हमने कहा कि हम टॉप 200 यूनिवर्सिटी बनेंगे दुनिया के. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि वेरी सून यू विल सी द यंग universities list coming out of the Times Higher Education. We will be ranked in the top 100, and overall across all, this is universities less than a vintage of 100 years, which are aged less than 100 years. So we'll be a top 75. And in the overall university space, and there are probably 20,000 universities across the world, we were ranked top 400 in the world. So that makes us the number 2 private university, the number 2 university in India, and the number 1 private university in India. I think these are unbelievable feats. We are 39th in the world in citations. That's research citations. 39th universities तो आप हाथ पे गिन सकते हो. We are number 1 in citations in the country in research. And this magic I think happens because of Shoolini Ma. और Shoolini Ma हमको गाइड करती है कि अच्छे काम करो, वैल्यूज़ में रहो. और हमारे पास जो फैकल्टी आई, कहाँ से आई, दुनिया भर से आई, और बच्चों ने जो साथ दिया, जो उन्होंने काम किया, और जो लोगों ने साथ दिया, पॉलिटिशियंस ने साथ दिया, ब्यूरोक्रेट्स ने साथ दिया, सबने साथ दिया सिमर. उसके बिना ये चीज़ नहीं बन सकती थी. एक और मैं आपको बात बताऊंगा, और शायद आप विश्वास नहीं करेंगे. पहला, Shoolini is a purely not for profit initiative. हमने दिया ही है, एक पैसा भी नहीं निकाला. इनफैक्ट जब हमने Shoolini स्टार्ट की, बहुत सारे लोग सोचते थे कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं. माई सैलरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज मोर देन द रेवेन्यू ऑफ Shoolini. ओके, सो नेवर डिड इट फॉर मनी. वी डू नॉट टेक इवन अ सिंगल पैसा आउट ऑफ Shoolini. और वही मेरा 10% फॉर्मूला है. बाकी लोग 10% प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हम नहीं निकालते. हम 10% एक्स्ट्रा काम करते हैं लोगों से. तो ये हमारा छोटा सा मैजिक है. Shoolini माँ का वरदान है, और Shoolini इज ग्रोइंग. हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं. कल ही हमारे TEDx था, आपने भी वहाँ पे बात करी, तो आपने देखा होगा बहुत मैजिक हो रहा है. बच्चे सब कुछ कर रहे हैं. और आई हैव नेवर बीन हैप्पियर इन लाइफ. मुझे अतुल जी 2-3 चीज़ें, आपने बात की फैकल्टी की, राइट, एंड यू हेयर जो हम बात कर रहे थे कल भी, पीपल हु बिल्ट अशोका, प्लाक्शा एंड यूनिवर्सिटीज़ लाइक काफ़ी जो बिल्ड हुई ISB वगैरह, देयर फोकस ऑन फैकल्टी हायरिंग इज़ अनरियल, राइट. बच्चे आ जाते हैं, बच्चे का एक सिलेक्शन भी हो जाता है, बट जब आप भी बात करते हो, योर फोकस ऑन रिसर्च, योर फोकस ऑन स्किल, यानी फोकस ऑन बिल्डिंग ए वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, राइट. फर्स्टली हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू डू इट, एंड सेकेंडली यूर इन सोलन. अगर अपने क्वालिटी फैकल्टी हायर करनी है, अच्छे लोग लेके आने जो पढ़ाएं, आपको चैलेंज कैसे आया इसको हायरिंग में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वर पीपल willing to come to Himachal and वहाँ पे पढ़ाने के लिए were they comfortable? इसको मैं 2 पार्ट्स में आंसर करूँगा सिमर. I'll speak about the other universities in a second. But 2005 में जब हमने स्टार्ट किया, हमने 3 मिशन रखे अपने. पहला मिशन, करेक्ट, पहला मिशन हमारा था that we will be deeply research and innovation led. Our belief is that if you do not have deep research in a university, then it should be a college, not a university. If you look at any top university of the world, they lead in research and innovation. So that was the first belief. And that's very, very deep in Shoolini. The second belief, or the second mission was, we will be
as honest as it gets. We are squeaky clean in everything we do. No left pocket, right pocket. The third mission was to work with students from smaller towns who are lesser privileged. So ये हमारे 3 मिशन है, बड़े सिंपल. चौथा हमने अभी ऐड किया है, to bring happiness to everyone that we work with. 4 मिशन के ऊपर हम काम करते हैं. तो रिसर्च वाला जो हमारा मिशन था, वो हमको फैकल्टी में हेल्प किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया. Imagine 2005, we had a small 40,000 square feet dilapidated building on Mall Road, Solan. And my dad says, I will get the best faculty into Shoolini. The best faculty in biotechnology, which was the starting point, comes from NIH, which is the National Institute of Health in Bethesda, Washington, D.C. So 2005 में 8-10 doctorals और postdoctorals from NIH joined Shoolini. अब वो क्यों आए, कैसे आए, हमें अभी आज तक नहीं मालूम. हमारा करिश्मा था या पापा का कन्विक्शन था या शूलिनी माँ का वरदान था. But imagine starting a business school. Just imagine that, Simar, with 10 faculty from Harvard. Imagine if you're doing that, right? And you have nothing. That's the power that we got in. We said we're going to do research. उसके लिए पैसे चाहिए, तो grants चाहिए. So we started applying to the government. Every time your project report is thrown. So, but हर रोज एक project लिखते थे, एक proposal लिखते थे. I still remember the first 2 lakhs we got was our 172nd proposal. So, कुछ पागलपन था, कुछ जुनून था, कुछ belief था कि कर सकते हैं. So I think एक बार ही अच्छे लोग आ जाएं, तो then more people come in. I think my dad played a very important role. So he had an amazing reputation. So a lot of people came because of him. एंड एक बात मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हम अक्सर सोचते हैं कि बाहर का पढ़ा हुआ या स्टीफन्स का या यूएसए का हार्वर्ड का बेस्ट फैकल्टी है. माय एक्सपीरियंस इज, and I'm going to make a very controversial statement here, that my best faculty, Shoolini's best faculty, are those people that we hired young, who are probably from Himachal, sometimes our own students, and they are the ones who are the world beaters. Gaurav Sharma and Amit Kumar, for example, they are world's top 1% scientists. They are PhDs from Shoolini, not from Harvard, not from MIT. And that is our success. And I think that should be the success of every institution in India. Give chance to this talent that you think is not capable, because this is the future and they are going to be a future stars. Because if English speaking was a big skill, then India will not have been run by someone with a surname starting with M. It would have been run by someone else. There's a revolution happening in India, Simar. English will cease to be the key skill for a CEO in India in the next 5 years. I can give it in writing. So this is my message to all the corporate people out there. Give chance to people from smaller towns. Give chance to kids who come from smaller colleges. And they will be your world beaters. They come way cheaper and they're way more loyal. And they're going to go out and make great institutions of the future. I can see that energy. I can see the vibe, कि छोटे शहर का लड़का बोल रहा है, कि पूरी दुनिया में जाके पूरी दुनिया में काम किया, वापस आया, अपने शहर के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने देश के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो कि आज टॉप नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन जाती है. नंबर 1 से मुझे याद आया, जो आपने विजन लिखा, हाउ इज़ द फीलिंग अतुल जी, कि जब आप एक विजन एक्चुअल रियलिटी बन जाती है. 2006 में आप एक ऐसी चीज़ लिख रहे हो, अभी यूनिवर्सिटी चालू भी नहीं हुई, राइट, एंड वी आर इन हिमाचल. 10 लोग फैकल्टी चलो आ गई, हिमाचल में है, स्टीरियोटाइप पूरा है, राइट. आज हम बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली की बात करते हैं, राइट, सारे भागना चाह रहे हैं. आप कहते हो कि नहीं जी हम तो यहीं यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनती है आज. हाउ इज़ दैट फीलिंग टुडे? हाउ इज़ दैट फीलिंग एंड वेयर डू यू गो फ्रॉम दैट फीलिंग? अब कौन सा, मैंने आपकी इतनी टॉक्स देखी है, पीछे लिखा होता है top vision 2022, top 100 universities by 2022. How is the feeling right now, and what's it feels good, but at McKinsey they used to be a term called insecure overachievers. So I think I'm an insecure overachiever, so are all of us at Shoolini. So जब हमारी रैंकिंग आ गई तो मैंने पापा को फ़ोन किया, वेरी गुड, आर यू हैप्पी? से नहीं, अगले साल की तैयारी करो. Right? So I think that's about success. It's unlimited, it's infinite, and that's again a message to all the viewers over here, that your vision and what you want to do are stepping stones, and you will keep on changing your goals.
So don't be constrained by your goals because goals will keep changing. आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा. मेरा ड्रीम तो सिटी बैंक जाना था. I wanted to be a trader actually at that point of time. I went to McKinsey. I wanted to be in the tech side of it. I wanted to be a consultant around technology, but I ended up in financial services. I ended up being a consultant specializing in banks and public policy. And now I'm a teacher, and then I'm an administrator, and I do a lot of other things. So my point I wanted to make, and this is for the viewers, is that your careers will be non-linear, and that's true for any institution. Uh, have values in your mind and have belief that you can do something exceptional. So अब हम क्या करना चाहते हैं? हमने नंबर तो चलो 1 आ गए, 10th आ गए, जो भी आ गया. But I want to not truly prove that this child, जो लोग जिसको डिस्काउंट करते हैं, जो इंडिया का बच्चा है, 95% चिल्ड्रन ऑफ इंडिया नॉट एम्प्लॉयबल, आपने पढ़ी होंगी न्यूज़, कि हमने मॉडल ऐसा बनाना है सिमर कि इसको प्रूव करना है कि ये बच्चा बहुत कैपेबल है. और ये मेरा अगले 5 साल का मिशन है कि हम शुलिनी में ये मॉडल बनाएं कि जो बच्चा गेट के एंटर आ गया, जो अंदर आ गया, उसको हमने टॉप जॉब दिलानी है या उसका एंटरप्रेन्योर बनाना है या जो भी वो करना चाहे उसमें वो सक्सेसफुल हो. कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो उसने हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे गेट्स में आ गया. दैट्स माई ड्रीम. एंड यू सेड अब मैं क्या सोचता हूँ? मैं ये सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शुलिनी को स्केल अप कैसे किया जाए. नॉट वन शुलिनी. Why should not there be 100 Shulinis across the country? Need not be in the name Shoolini. When I say Shoolini, I'm talking about the model. What is a model? Deeply research-centric, highly student-centric, deeply involved in giving skills to students who otherwise wouldn't have a chance, but extremely efficient in terms of the way it operates. So our average cost per student, whether capital or operating, is 25% of the average top 100 Indian university. And that is the big skill that we bring in. And that's the great business model that Shoolini is today. आपके कैंपस जब भी आते हैं, ये बड़ी खुशी आती है आपके कैंपस आगे. शूलिनी यूनिवर्सिटी के पास जब आते हैं, आई हैव बीन टू योर यूनिवर्सिटी about 3-4 times, and whenever you are there in the university ना एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है. आपने हैप्पीनेस की बात की, हैप्पी कैंपस की बात की. एक तो पहाड़ों में बना है, एक तो वैसे एक कामनेस वाइब है. बट जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे शूलिनी का, व्हाट वाज इन योर माइंड? इतनी खुशी और इतनी हैप्पी स्पेस कैसे है वो यूनिवर्सिटी? मतलब वहाँ कोई भी जाता है. कल भी हम आपकी यूनिवर्सिटी जब आए तो एवरीबडी वो सारे बोल रहे थे यार बड़ा ना यहाँ पे कामनेस है, बहुत एक शांति है. तो व्हाट वाज द विजन बिहाइंड बिल्डिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरिंग कि नेचर के साथ बनी हो? व्हाट वाज द विजन व्हेन यू वर बिल्डिंग एंड यू आर स्टिल बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी? I think 3-4 विजन्स थे सिमर जो मैंने बात की. पहला तो we believe that the university should be like a resort जैसा दिखना चाहिए. Secondly, हैप्पी कैंपस होना चाहिए. तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? हैप्पीनेस नेचर से आती है, फ्लावर्स से आती है. तो हमने बहुत सारे फ्लावर्स लगा दिए. जो बाकी लोग हैं उनके लिए छोटा सा टिप है बाकी यूनिवर्सिटी वालों के लिए, भाई मार्बल पे पैसा मत लगाओ, पहले तो महंगा बहुत है, फ्लावर्स पे लगाओ, कलर ज़्यादा आएगा और हैप्पीनेस भी ज़्यादा आएगी और बेटर बनेगा. So we invest a lot in terms of new different things to keep the campus exciting, whether it's tree houses, whether it's lawns and gardens or architecture. I think these are very, very important things. But I think इसका high level vision तो था. शांति निकेतन से है, गुरुकुल थॉट से है कि टीचिंग जो है वो गुरुकुल टाइप होनी चाहिए. बट ऑनेस्टली बनता गया. हम तो चले थे अकेले मंजिल मगर लोग आप सब आते गए और कारवां बनता गया. तो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा मास्टर प्लान था, कुछ पैसा वैसा तो था नहीं, पर छोटी छोटी चीज़ें करते रहे और वो छोटी छोटी चीज़ें करते करते कुछ बड़ा बन गया. अभी तो बहुत बड़ा करना है सिमर, अभी तो बहुत छोटा है. बट आई थिंक लाइक आई सेड, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, वैल्यूज़ पे मैं फिर वापस आऊँगा. जब ये चीज़ें आपके साथ होंगी, विजन आपके पास होगा, तो अच्छी चीज़ें बनती रहेंगी. एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, यू आर वेरी डीपली इंटरेस्ट, आपकी इंडस्ट्री है उसमें आप हो. हाउ डू यू सी द करंट एजुकेशन सिस्टम, वेदर इट इज़ अंडरग्रेड में बाद में आऊँगा, बट राइट फ्रॉम स्कूलिंग? I joke saying that by the time students come to us, they've gone through 15 years of educational abuse. हमारा बहुत boxed system है education का. We do not create leaders. We are creating followers in India.
the danger of India is that we might end up becoming the e-clerk of the world. But we are creating followers because our education system is geared towards creating conformity. We're not creating talent that asks questions. We're not creating talent that takes initiative. And that's where we have to sort of intervene and break the box. India has to create leaders. India has to create innovators. India has to create problem solvers. India cannot be doing something that the world wants it to do. So the change has to happen right from school education. जो हो रहा है कहीं अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छे schools भी आ रहे हैं. I think the new education policy will start that. But the challenge is actually not in the schools that you hear, the Strawberry Fields or the DPS or the Bhuvan Vidyalayas of Chandigarh or the world. The challenge is when you go to these smaller villages. The challenge is when you come to the smaller towns. I think the education is extremely, extremely stereotyped. So that hopefully will change. In higher ed, and that's where I specialize in, I think the world of higher ed is going to be fundamentally different in the next 5 to 8 years. There's a small joke. A doctor and a teacher, they go into coma. The year is 1811, and both come alive in 2020. The doctor can't recognize the operating theater, but the teacher picks up the chalk and starts teaching. And that is true what the current status is. But next 5 years, I think there's going to be big tech change, which is going to drive a change in education. People are going to question the need for 4-year degrees. Who told us that a degree should be 4 years or 3 years? It was not God for sure. We just adopted something, and then everyone wants to make it 3 years, 4 years, 6 years, 3 years PhD. There's going to be a challenge on that because there will be someone who will go out and challenge the status quo. And that challenge is going to happen, I think, in the next 5 years. What the future will be, I don't know. But I can say that as universities, if we want to survive, we will have to go out and understand what's happening in the landscape. A lot of people don't believe me. They laugh at me when I say this. I think the future is going to be from universities from India, universities like Shoolini, who will try to disrupt the way things are done because we have no other choice. And that's what disruptors do, and that's what innovators do. So think about a university that is extremely inspirational in the way it looks and feels. Think about a university that's highly technology-centric, deep tech, uses lots and lots of technology in terms of giving learning to its students, but also a place where people from all over the world come because knowledge is created when people come together and create knowledge. So it's a place where people love to come. It's like the Takshila and Nalanda. So I think that's going to be the future of the university of the future. I think the best thing which I think most of the people like about you is your no filter Atul Khosla attitude, right? You're right up there, right? And I think in this conversation also, you're speaking from your heart, and we can see that. But who inspires you, sir? Who do you think that in not only in this industry but generally, who's your inspiration? And सबके गुरु होते हैं, Simar. So Steve Jobs, I think he was a great thinker. It's a very famous quote by Steve Jobs. If you're crazy enough to believe that you can change the world, you will. So you have to believe to break the status quo. Mahatma Gandhi, the ability to speak the truth and the ability to live your life that you want to. I think I'm a big believer in Gandhi. My guru, Paramhansa Yogananda, I think that's where inspiration comes from. Brings hopefully peace into my mind. I have a very chanchal mind. I'm trying to sort of calm it down. I think I get that inspiration from Paramhansa Yogananda. My father, I think he's a phenomenal entrepreneur, educationist. I've never heard ever him say no ever in his life. He always says yes. What an optimist he is. I think you always look up to your parents. I think I have a great family. I got inspiration from my family, my wife, my brother, my mother, and I think my students. I think they give a lot of inspiration. And of course, friends like you. से स्टूडेंट्स जो हैं एंड
while I was at the campus, students across the country हैं. How are you reaching to these students? I don't see Shoolini, advertise. हर जगह आप कोई advertisement है उस पे तो you're not focused on, इतना ज़्यादा नहीं आप कर रहे. But one thing which I observed that in Solan जो आपकी यूनिवर्सिटी में across the country से लोग आ रहे हैं. How do you manage that? उसको कैसे आपने मैनेज किया? एंड मेरा अगेन वो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आर पीपल कंफर्टेबल टू कम, एक बॉम्बे का जो बच्चा है या कलकत्ता का बच्चा है या दिल्ली का बच्चा है, आर दे कंफर्टेबल टू कम डाउन कि चलो हिमाचल में जाके 2 साल या 3 साल या 4 साल लगा के आए? I think educational institutions today, higher ed today, are amongst the largest buyers of print media at least, or media. So बहुत ज़्यादा competition है सिमर, और उसका logic भी बड़ा simple है because we are a highly capital intensive industry. Once you put in the capital, you need to get in the students, right? Correct. So the jury is not out between the winners and the losers and not so good universities. And the analogy I give is that of the Indian IT industry. 15 years ago, everyone was out there. That's what happens when there's a gold rush. And then slowly the ones with quality get filtered and they start becoming more dominant. And you'll see that happening in the Indian higher ed system. I mean, there are so many universities around us, in Mohali itself, in Himachal, in Delhi, and across the country. There are 1,200 universities. So students find it extremely, extremely difficult to differentiate between one university to the other because everyone says number one. Someone might be number one in their state. Someone might be number one because of something, right? Name it, everyone is number one. Marketing gimmick hai. Yeah, it's a marketing gimmick, right? Some people are honest, and I'll cheekily say we are honest in what we say. Some people might not be. So, आसान काम नहीं है. So, 3-4 चीज़ें हैं. सबसे पहले तो quality. If you're giving quality, the word spreads. It might be slow, but the word spreads. A small university like us cannot advertise because it's very expensive. There's a share of voice. Our share of voice will always be low. So I think our strategy is quality. Digital helps in a big way. I think today we're lucky we have models which you can use which are less capital intensive. Social media, I think it's important. But the most important thing is student to student. I think the reputation student to student is what really builds the character compound of a होता है place. वो So एकदम compound होता है, बिल्कुल सिमिलर compound होता है. आजकल का बच्चा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में रहना चाहता है. तो हमने एक सर्वे करवाया जेनजी में कि what do you seek? So it's very interesting and I'll share this survey. 55% people said we want to be in a metro. Okay? 20% said that we want to be near a metro. Okay? 10% said हमें मालूम नहीं है. I think जो बाकी जो बचे, I think 10%, they said we want to be in an exotic location. तो बच्चा क्यों जाना चाहता है दिल्ली, बॉम्बे, आजकल चंडीगढ़? क्योंकि उसको पब में जाना है. I think in the next 5 years, all these attractions will also come to smaller towns. And I think that's when the complexion will change. Increasingly, people would want to come to the mountains. So I think it's a matter of time when places like Shoolini will be more preferred compared to Delhi, Bombay, Chandigarh. And how's the industry academia relationship of Shoolini? I was saying that there are a lot of labs that you've collaborated and all that. And I think with your experience and with the team's exposure, does that help and is that your a priority? Because आपने बात की कि एक बार बच्चा Shoolini के गेट के अंदर आ गया, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी है कि उसको एम्प्लॉयमेंट हो और वो बेस्ट जगह उसकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, वेदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो या एंटरप्रेन्योर बने. तो हाउ उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उस पर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे और कई स्टूडेंट्स हैं जो Shoolini में अप्लाई करना चाहते हैं. तो व्हाट इज़ योर एज ए फाउंडर एंड वीसी, व्हाट इज़ योर सॉर्ट ऑफ आउटलुक टुवर्ड्स दैट? तो डिप्लोमेटिक आंसर चाहिए कि politically correct आंसर करिए आंसर? सर आपने अभी तक तो सारे नो फिल्टर आंसर दिए हैं, तो मेरे हिसाब से इंडिया में हमें इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप्स बिल्ड करना नहीं आता. किसी को भी नहीं आता है. कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा आता है, हमें हो सकता है Shoolini में थोड़ा ज़्यादा आता हो. बट द रियल कनेक्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया is not happening in India. And why is it not happening? First is lack of trust. So academicians industry को trust नहीं करते, industry academicians को trust नहीं करते. बहुत lack of trust है, right? Of course placements करते हैं, सब कुछ करते हैं, but that's not industry connect. Industry connect is when, like Stanford,
you say, we have 10,000 startups coming up. The day I say there were 34 unicorns that came out of Shoolini, I think that's when the rubber will hit the road. And that's really not happening today. Industries' investment in research today in India is very, very low. Yes, yeah. We do not understand the concept of research. एक पे मैं 1 मिनट लगाऊंगा सिमर, अगर आप जी, मुझे बताओगे जी, जी। हमारे पास 1500 पैटेंट हैं, हमारी रिसर्च बहुत आगे है. फर्स्ट क्वेश्चन पीपल आस्क मी इज, क्या तो इसका निकला क्या, इसका कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है. मैं उनको, अब क्रिटिक्स को ये बताना चाहूंगा कि कमर्शियल एप्लीकेशन बनने में बहुत टाइम लगता है यार. हम तो बहुत छोटी सी यंग यूनिवर्सिटी हैं, 12 साल हुए हैं सिमर. किसी भी चीज को फ्लावर करने में, स्पेशली लाइक रिसर्च, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट. 50 years, 30 years, 20 years. But as we speak at Shoolini, we now have multiple labs which are sponsored by industry. I'm very, very proud to say that Vardhaman Industries has given us a water lab, which is a deep nanotech lab. In simplistic terms, we have an electron microscope on campus. आपने बचपन में पढ़ा होगा बच्चों. You can do research on that. We have a cancer lab. We are one of India's largest preclinical cancer centers. You can work on real cancer topics. We are doing work on deep tech in cancer, solving cancer issues. We call that computational biology. How do you bring computation into biology to solve the world's biggest problems? And all of that is happening because of money. Some money that we're starting to get from industry, a little bit of touch that we are having with industry, but it needs to be way, way, way more. I think my dream will get, I would say, I'll be able to live my dream when every third student creates a startup. There are startups. You went to Chai Shack. That's a very exciting startup a student is doing. We have built a tech stack for an online university. मैंने उसकी बात की, उसमें अब कुछ valuations भी आए हैं हमारे पास. We are building a life sciences company. We've got some valuations coming over there. But how do we make it all pervasive, right? Every third kid says, यार मैं startup खोलूंगा. और जिस दिन गली गली ऑफ इंडिया में स्टार्टअप खुलेगा और इंडस्ट्री के सपोर्ट के साथ खुलेगा, उस दिन इंडिया एक डिफरेंट कंट्री होगा. उस दिन शूलिनी डिफरेंट होगी, उस दिन बाकी यूनिवर्सिटीज डिफरेंट होगी. तो हरटेक, सिमर, स्टार्ट कर दो, आ जाओ. और हम एनर्जी पे बहुत काम करते हैं. Let us start doing some work together. On ground execution, and I think we both believe in execution. हम on ground वाले बंदे हैं, ज़रूर करेंगे सर. In the end, sir, how do you see India at 2047? Next 20 years, सोलन में आपका वहाँ पढ़ाई की, IIT कानपुर गए, दुनिया घूमे, वापस आए सोलन, अपने देश के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज शूलिनी है. 2023 में you are, as मैंने इंट्रोड्यूस किया था, you're not unlike many other VCs that you meet. You are on the ground, real talking to people and solving the problems. कहाँ देखते हो सर इंडिया को नेक्स्ट 20-25 years? Is it India's time? So सिमर, आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी. अब मुझे नहीं मालूम थी कि नहीं थी, बट इतना ज़रूर मालूम है कि 2047 पे सोने की चिड़िया ज़रूर होगी. उसका कारण है कि इकोनॉमिक्स इज़ विद आवर साइड, डेमोग्राफिक्स इज़ विद आवर साइड, and hopefully the world politics is with our side. And I tell this to my students. I say that all of you will be very, very rich. सिर्फ एवरेज बने रहो, बुरी आदतों से दूर रहो. If you have a sane head over a sane set of shoulders, you will be successful. At least you'll have a big car, you'll have a Mercedes. Everyone in India will drive a Mercedes because economics is with us. I think we have to ensure that we are a peaceful nation in the next 25 years. We avoid social strife. We avoid civil strife. And there will be forces that will push us towards that. Because imagine, I was reading an article by The Economist, which was saying which are going to be the top 20 countries of the world by 2047. America, of course, China, then India. Pakistan was 6th or 7th in that list. Indonesia was very high. And there were some countries that you might not even heard of. And I said, gosh, if I was an American, I would be working very, very, very hard to kill all those countries which are going to possibly overtake me in the next 25 years. So I think all of us as growing nations have to be very, very careful about the environment around us. We have to be working towards a goal.
We need to have a vision of success. And lastly, for India, I would say, for Indians, हम जुगाड़ बहुत करते हैं सिमर. हमको जुगाड़ से बाहर निकलना पड़ेगा. हमको परफेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा. और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जिसके अराउंड हमने सदियों से प्रोग्रेस किया है, वैल्यूज़ अराउंड ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, उसको इम्बाइब करना पड़ेगा. अगर ये चीज़ें हमने कर दी तो 2047 तक इंडिया तो जन्नत होगा. होपफुली हम भी होंगे, आप तो ज़रूर होंगे. और मैं शूलिनी में बहुत ध्यान देता हूँ क्लीनलीनेस पे. आप आए हो तो आपको एकदम साफ जगह मिलेगी. तो आई थिंक ये छोटी-छोटी चीज़ें एज़ अ नेशन वील हैव टू इम्बाइब. डिसिप्लिन, आई थिंक डिसिप्लिन भी सोशल प्रेशर से आ जाता है, बट हैप्पीनेस लाइए. इफ यू आर अ हैप्पी नेशन, we'll be a successful nation. So I see Shoolini hopefully rubbing shoulders with Harvard. I would see Solon to be a prospering town, like any good town in the world. I would see North India, Chandigarh, to be like the Silicon Valley. Possibly it's going to be the future Silicon Valley of the world, where there are huge number of startups. Possibly Simar is going to be one of the world's richest men, because solar and sustainability is the future of the world. And I think we're all living in harmony and peace. And hopefully we can tell the world and show the world that we can also do something exceptional, and we can do something which is beyond our expectations. सो ब्यूटीफुल सर. आई थिंक ये प्रोडिक्शंस को हमको ना सारे नोट कर लेना चाहिए ना, स्पेशली द सोलर एंड सस्टेनेबिलिटी एंड द रिचेस्ट वाला जो आपने बोला, वो तो स्पेशली वो तो मेरे को पता है होगा सिमर. वो तो बट ये ना, ये फ्री चीज नहीं होगी. जब आप थोड़े से अमीर होंगे तो आपको मालूम है कि यूएसए के जितने लोग हैं वो एंडाउमेंट्स चेक साइन करते हैं. जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास बहुत पैसा आता है इसके थ्रू. एब्सोल्युटली सर. इट वाज अ प्लेजर सर. एंड आई थिंक आई हैव नोन यू इन द रीसेंट पास्ट. एंड ये पक्की बात है सर, कुछ स्पेशल बन रहा है शूलिनी में. जितनी बार मैं आया हूँ कुछ स्पेशल तो बन रहा है. एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट योर कन्विक्शन, योर इंटायर टीम्स कन्विक्शन. एंड मैंने ना कल एक बात शाम को मैं बोल रहा था टीम को, आप लोगों में ना एक रॉ पैशन है. एंड एक नेशन बिल्डिंग का एक वो है कि यार नेशन के लिए कुछ करना है, ऐसी चीज़ बनानी है जो दुनिया के लिए बने. एंड माई कॉन्ग्रेचुलेशन सर फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट हरटेक एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस व्हाट यू आर बिल्डिंग. एंड वी होप ऑल योर प्रेडिक्शंस कम ट्रू 2047. Thank you, Simar. I'll just end by saying that I am just one part of the answer of Shoolini. Yeah. It's been driven by lots of people. Vishal Anand, my fellow partner, is there. I think he's an exceptional talent. Ashish, my brother, my family is involved, my sister-in-law Ashu, my wife Avni. But more importantly, I think my parents have played a great role. And everyone around our faculty has played a great role to take Shoolini where it is. We are learning to crawl right now. Hopefully we'll learn to run over the next 10 years. Absolutely sir. Thank you for doing this and बहुत मज़ा आया सर. बहुत मज़ा आया सिमर, और thank you for calling. Thank you.